Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter 15 sampling distribution is under discussion today, lecture number 16, and the fourth topic is sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. In this lecture, students, I will discuss only the notations, formulas, and verification formulas for the topic sampling distribution of difference of two sample proportions. Now, students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. In the contents of this lectures, I will discuss the first point, formation of sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. In the second point, population notations with formulas. In the third point, I will discuss mean, variance and standard error formulas for sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. And in the fourth point, I will discuss the verification formulas for mean, variance and standard error for sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. And these are the 4 points in this lecture I will discuss. Now the first point is formation of sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. For the fourth topic of the sampling distribution, steps involved in formation of sampling distribution of difference of two sample proportions P1 hat minus P2 hat by sampling with replacement or without replacement using sample sizes N1 and N2 as. In the first step, make all possible samples of size N1 and N2 by sampling with replacement using formula N power N or without replacement using formula NCN from the given population 1 and 2. Then find the sample proportions P1 hat and P2 hat of each samples. In the second step, make the differences P1 hat minus P2 hat using the sample proportions P1 hat and P2 hat as find in step 1. In the third step, prepare the sampling distribution of difference of sample proportions P1 hat minus P2 hat. Then find mean, variance and standard error of the sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. In the fourth step, compute the population proportions P1 and P2 of the population 1 and 2. And in the fifth part, verify the results using verifications formulas. तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टेप्स 5 के अंदर जो है इसको कंप्लीट करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैंपल प्रोपोर्शंस. फर्स्ट स्टेप में हम दोनों पॉपुलेशन से सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे और उनकी प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करेंगे हर सैंपल हर पॉपुलेशन के सैंपल्स की, और देन फिर हम लोग जो है वो दोनों प्रोपोर्शंस को उनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे एज इट इज. दोनों के प्रोपोर्शंस को राइट करेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज और देन फाइंड इट्स differences of P1 hat minus P2 hat और देन उसके जो है वो हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे विद फ्रीक्वेंसीज और देन उसके बाद हम लोग मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 hat एंड माइनस P2 hat. और इन द फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्थ स्टेप में पॉपुलेशन की प्रोपोर्शंस को फॉर पॉपुलेशन 1 के लिए और पॉपुलेशन 2 से भी हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करेंगे जो हमें इंटरेस्ट हमें गिवन होगा प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग. और इन द लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम लोग वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट्स को यूजिंग वेरिफिकेशन फॉर्मूलाज. Now in the second steps, I will discuss notations and formulas for both population and sample. First of all, I will discuss the population notations and formulas. First, population size is denoted by capital N1 and its population proportion is P1. P1 से denote करेंगे. Formula is X1 over capital N1. X1 is your interest और इसको total population size पे divide कर देंगे और इसके against proportions which is denoted by Q1 equal to 1 minus P1. Similarly, for the second population proportions is denoted by P2 and formula is capital X2 over capital N2. Second population size पे divide कर देंगे और इसके against proportion is denoted by Q2 which is calculated from the 1 minus P2. On the right hand side, I will discuss sample notations and formulas, and first sample size is denoted by N1 or its sample proportion is denoted by P1 hat. Formula is small x1 over sample size N1 और इसके against proportion is denoted by Q1 hat equal to 1 minus P1 hat. And similarly, second sample proportion is denoted by P2 hat और its formula is small x2 over sample size N2 और इसके against proportion is denoted by Q2 hat और which is equal to 1 minus P2 hat. तो हम लोग इसकी proportions जो है कैलकुलेट करेंगे
x1 ओवर n1 के कॉन्सेप्ट से। x जो है आपका इंटरेस्ट होगा जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और n जो है वो आपके पास कैपिटल N जो है वो पॉपुलेशन साइज पे डिवाइड हो जाएगा, और सैंपल जो है वो सैंपल साइज n पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस एंड सैंपल प्रोपोर्शंस। Now in the third point, I will discuss the formulas for mean, variance and standard error for the sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. The first point, formula for the mean of the sampling distribution of P1 hat minus P2 hat is as denoted by mu P1 hat minus P2 hat को सबस्क्रिप्ट में राइट करेंगे। It is also denoted by expected value of P1 hat minus P2 hat, और स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करेंगे विद समेशन साइन, समेशन राइट करेंगे, और आपने जो भी राइट किया है एक्सपेक्टेशंस के अंदर P1 hat minus P2 hat इसको एज इट इज राइट करेंगे, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी f of P1 hat minus P2 hat से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ mean of sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. Expected value of P1 hat minus P2 hat equal to summation P1 hat minus P2 hat into f of P1 hat minus P2 hat. और वेरिएंस के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर P1 hat minus P2 hat, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वेरिएंस VARs राइट कर सकते हैं ब्रैकेट में P1 hat minus P2 hat, और इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 hat minus P2 hat का स्क्वायर और माइनस साइन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 hat minus P2 hat का होल स्क्वायर यूज करेंगे। और यहाँ पे आपके पास जो टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 hat minus P2 hat का स्क्वायर, इट इज कैलकुलेटेड एज विद समेशन साइन expected value of P1 hat minus P2 hat का स्क्वायर into f of P1 hat minus P2 hat इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समेशन आपने एक्सपेक्टेशंस को यूं ओपन करके इसको कैलकुलेट करना है, और स्टैंडर्ड एरर में स्टूडेंट्स आपने सिंपली जो है वो अपने स्क्वायर रूट का साइन यूज करना है, विच इज द डिनोटेड बाय सिग्मा, और सबस्क्रिप्ट में P1 hat minus P2 hat राइट करेंगे। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय s डॉट e स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 hat minus P2 hat एंड स्क्वायर रूट ऑफ expected value of P1 hat minus P2 hat का स्क्वायर माइनस साइन, और expected value of P1 hat minus P2 hat का whole square, and these are the formulas for mean, variance and standard error, and you can calculate the sampling distribution of P1 hat minus P2 hat, or then find the formulas using formulas calculate the mean and variance and standard error. Now in the last part, I will discuss the verification formulas for mean, variance and standard error for sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. First of all, I will discuss the verification formulas for sampling with replacement. First verification is for mean. Mu P1 hat minus P2 hat is always equal to difference between two population proportions P1 minus P2. And second verification is for variance. It's denoted by sigma square P1 hat minus P2 hat is equal to right side पे P1 Q1 over N1 for the first population, और second population के लिए यूज करेंगे second population proportions P2 Q2 over N2, sample size पे डिवाइड कर देंगे। This is the second verifications for sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat, और third verifications is for standard error which is denoted by sigma P1 hat minus P2 hat, और simply हम लोग square root यूज कर लेंगे, square root of P1 minus P1 Q1 over N1 plus P2 Q2 over N2। राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस की हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वेरिफिकेशंस, और फर्स्ट वेरिफिकेशन इज सेम न्यू P1 hat minus P2 hat is equal to P1 minus P2, और second verification is for variance denoted by sigma square P1 hat minus P2 hat, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे FPC फैक्टर। सिंपली आपने ऐड कर देना है FPC फैक्टर P1 Q1 over N1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे FPC फैक्टर N1 और माइनस स्मॉल n1 और कैपिटल N1 पॉपुलेशन साइज डिनोमिनेटर में N1 माइनस 1। दिस इज द FPC फैक्टर, और ये हम लोग यूज करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोसेस में, और इसके साथ ऐड कर देंगे हम लोग सेकेंड पॉपुलेशन का P2 Q2 इंटू N2 माइनस N2 ओवर N2 कैपिटल N2 माइनस 1। तो ये आपके पास सेकेंड वेरिफिकेशन होगी फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 hat minus P2 hat के लिए, और स्टैंडर्ड एरर में स्टूडेंट्स हम लोग इसको डिनोट करेंगे सिग्मा P1 hat minus P2 hat, और सिंपली आपने पूरे इसके ऊपर स्क्वायर रूट यूज करना है, और एज इट इज आपने इसको राइट कर लेना P1 Q1 over N1 इंटू कैपिटल N1 माइनस N1 over N1 माइनस 1 प्लस साइन P2 Q2 over स्मॉल n2 और FPC फैक्टर n कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 सैंपल साइज ओवर N2 माइनस 1।
So these are the verifications for sampling with replacement on left side, and right side is sampling for without replacement. In this lecture, complete structure of the sampling distribution of sample proportions P1 hat minus P2 hat has been discussed with population and sample notations formulas, and also discussed the mean, variance and standard error formulas for sampling distribution, and also discussed the verification formulas. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.